तो हम एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.6, जिसमें हमें देखना है क्वांटिफायर्स। दो टाइप के क्वांटिफायर्स होते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर। फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जिसको हम इस फॉर ऑल मीन्स उल्टा ए से डिनोट करते हैं। पहला क्या है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जिसे हम डिनोट करते हैं उल्टा ए फॉर ऑल, और ये होता है एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जिसको हम डिनोट करते हैं उल्टा ई से, उसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट और फॉर सम, और उसको बोलते हैं फॉर ऑल और फॉर एवरी। इसको क्या बोलते हैं हम, फॉर ऑल और फॉर एवरी। इसको बोलते हैं फॉर सम और देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। तो ये है दो टाइप के क्वांटिफायर, यूनिवर्सल एंड एक्सिस्टेंशियल। तो फर्स्ट इस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है देयर एग्जिस्ट और फॉर सम x बिलोंग्स टू a सच दैट x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। मीन्स a में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 देगी, वो a में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो a में एग्जिस्ट करने वाली 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 देगी, एक वैल्यू है वो 3। फर्स्ट है a इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो x को अगर 3 रखेंगे तो 7 होएगा। मीन्स हमें क्या बताना है इधर, स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, और अगर ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। सो वी विल राइट इन दिस मैनर, देयर एग्जिस्ट 3 belongs to a and it gives 3 plus 4 is equal to 7. Hence the statement is true and its truth value is t. Now the second statement or second question, for all x belongs to a, इसको हम क्या रीड करते हैं, for all x belongs to a, x plus 4 is less than 10, x plus 4 is less than 10 बोला है। for all x belongs to a means a में सारी वैल्यू x plus 4 is less than 10 देगी क्या, सारी वैल्यू तो नहीं है। 3 plus 4 7 लेस देन 10 करेक्ट है। 4 plus 4 8 लेस देन 10, ये भी करेक्ट है। 6 plus 4 इज लेस देन 10 नहीं, लेस देन इक्वल टू 10 होता तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती, बट ये लेस देन 10 बोला है। एंड 8 plus 4 12, वो भी लेस देन 10 नहीं है। सो द आंसर विल बी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x is equal to 6 and x is equal to 8 do not satisfy the given statement. Do not satisfy the given statement. Hence the truth value is false. Hence the truth value is false. Sorry, hence the given statement is false and the truth value is f. Now third question, for all x belongs to a, x plus 5 is greater than equal to 13. For all means 3 plus 5 8 होता है, which is greater than equal to 13 नहीं। So we will write for all x belongs to, इसको क्या बोलते हैं, belongs to a, 3 plus 5
8 + 5 कुछ भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। द गिवन स्टेटमेंट is false, hence the truth value is f. And fourth one, there exists x belongs to a such that x is odd। मतलब a में ऐसा कोई वैल्यू है जो ऑड है, वो एग्जिस्ट करता है a में ऐसी कोई वैल्यू। हाँ, 3 हमारा ऑड है, बाकी 4 6 8 इवन नंबर्स है। सो देयर एग्जिस्ट 3 belongs to a is odd number the given statement is true। The given statement is true, hence the truth value is t। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.6 बहुत ही सिंपल। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें क्वांटिफायर यूज करके इस स्टेटमेंट को ट्रू बताना है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसे हम क्वांटिफायर यूज करके हमें प्रूव करना है कि ये ट्रू है। फर्स्ट इज x² = 25 डिफाइंड ऑन n। हम लोग n लेते हैं, वहां पे x बिलोंग्स टू a ले रहे थे, यहाँ पे n लेते हैं। सो देयर एग्जिस्ट x belongs to n such that x² = 25 is a true statement। ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, is a true statement। therefore x belongs to n ना, so x = 5 belongs to n satisfy x² = 25 बराबर है। अगर x = 5 रहेगा तो 25 आएगा उसका आंसर। तो देयर एग्जिस्ट x belongs to n such that x² = 25 is a true statement, therefore x will be 5। ये हो गया ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड, x - 3 = 11, सो देयर एग्जिस्ट x belongs to n, ये भी such that x - 3 = 11 is a true statement, is a true statement। therefore x - 3 = 11, x - 3 मीन्स x क्या रहेगा हमारा 14, 14 - 3 = 11 हो जाएगा। सो x = 14 belongs to n satisfies the given sentence, therefore 14 - 3 = 11। ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड देखते हैं, x² + 1 is less than equal to 5, तो वो क्या होगा x² + 1, देयर एग्जिस्ट x belongs to n such that x² + 5 sorry x² + 1 is less than equal to 5 is a true statement, true statement। अब x² + 1 = 5, x क्या रखेंगे तो लेस देन इक्वल टू 5 आएगा। एक तो 1 रखेंगे, 1 + 1 2 विच इज लेस देन 5, एंड 2 का स्क्वायर 4, तो x = 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 विच इज इक्वल टू 5। सो x = 1 एंड x = 2,
belongs to n satisfies the given sentence. Satisfies the given sentence. Therefore, 1 square plus 1 is less than equal to 5 and 2 square plus 1 is less than equal to 5. This is the solution of the question. और ये थी हमारे एक्सरसाइज 1.6 जो कि क्वांटिफायर्स पे बेस्ड है.